Hello students, now we are going to move forward in our chapter, that is organizational structure. Okay, so what is the meaning of this organizational structure? Here, when the manager are performing organizational function, an organization structure get created automatically which defines the job position, authority, responsibility of different employees. So basically it's a structure, it's a kind of superior subordinate relationship. It's a kind of layout, just like a flow chart. Suppose if you want to have a look at this flow chart, you can make it like you can write here AM, that is assistant manager. Okay, and under him there will be some more managers like manager 1, manager 2, manager 3. Okay, they are at junior level. Then under them there will be some employees. Under every manager there will be some employees who will be working. So worker 1, not worker, you can write employee 1, as I told you, E1, E2, E3, like that. So here this thing, you can say that assistant manager, this person possesses the most of the power in this organization structure. Then less power is held by this M1, M2, M3, these junior level managers. Then all the employee, they are having the least power or authority to manage the things. So basically this entire thing here, it is called as organization structure. This is kind of a flow chart, and here you can say this assistant manager is a is a supervisor, and all these people, all these junior managers are his subordinates. Okay, तो assistant manager क्या है, ये टॉप मोस्ट पे बैठा है, उससे जूनियर लेवल पे जो है वो उसके सबॉर्डिनेट कहलाएंगे। एंड सेम वे दिस E1, E2, E3 एम्प्लॉयज जो कि M1, M2, M3 के अंदर होंगे, दे विल बी सबॉर्डिनेट्स E1, E2 ऑफ M1। ओके, जूनियर मैनेजर्स के भी सबॉर्डिनेट होंगे। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Now, organization structure can be defined as the network of jobs, responsibility and authority at the different level, or it can be called as a framework within which the managerial and operation tasks are performed. Okay, so it specifies the relation between people, work and resources. Okay, so basically in organization structure, what the company do after planning, they will set a kind of structure, they will define the position and assign the power and responsibility for the various positions. So here they are bringing together this people's work and their resources. Everything will be, it will be kind of relation. Because why we are making such a kind of structure? Because there will be people who will be working, there will be some work which will be allotted to them, and there will be resources which will be used by the people for carrying out those activities. So that's why we're making such a thing. Now, span of management gives the shape to the organization structure. So what is the span of management is? Let us discuss what is the span of management. So it means how many employees subordinate can be effectively managed by one manager. Okay, or how many subordinates are under one superior. Okay, so here let us talk about, suppose there is one assistant manager, and under him there are four managers: M1, M2, M3, M4. So these four peoples you can see working under him. So this assistant manager, he is actually handling four junior managers. So span of control of this assistant manager is only four managers. But if he is more capable, suppose in future he turns out to be more capable, so what we can do, we can add one more manager under him, and now he'll be taking care of five manager instead of four. Okay, so this is called the span of management. ओके, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक मैनेजर कितने अंडर उसके कितने एम्प्लॉय को मैनेज कर सकता है। जैसे कि एक मैनेजर के अंदर सपोज देर आर 5 पीपल्स वर्किंग, और 5 को अच्छे से मैनेज कर सकता है। आफ्टर कंपनी ने चेंज कर दिया, 5 की जगह 10 एम्प्लॉयज़ को उसके अंडर कर दिया। नाउ दिस इज़ प्रॉब्लम फॉर हिम, अब वो इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि कितने वर्कर्स को या कितने एम्प्लॉयज़ को एक मैनेजर को एट अ टाइम देना चाहिए, उसके अंडर में रखना चाहिए, ताकि वो ठीक से मैनेज कर पाए। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। Now, on what factor this span of management depends? So first is capacity and intelligence level of managers. So if the manager is more intelligent, you can give him
under him you can put more peoples, so he will take care of each and every one. अगर वो बहुत समझदार है तो उसके अंदर आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी रख सकते हो, ज़्यादा मैनेजर भी रख सकते हो, वो आराम से उनको हैंडल कर लेगा. सेकंड इज ट्रस्ट ऑफ द मैनेजर इन द एम्प्लॉयज़. You see, if the manager is having trust in the employees, then you can put so many employees under him because the employees are trusting the manager. So the trust of manager should be there. So the manager who have more trust and faith in their employees, they can have a large span. जिसको ज़्यादा ट्रस्ट है एम्प्लॉय के ऊपर, वो ज़्यादा अपने अंडर एम्प्लॉय को हैंडल कर सकता है. Okay, now the intelligence level, the employee's intelligence level. So here they were talking about the manager intelligence, now the employee intelligence level. If the employees are intelligent, okay, so the it will be a easy job for the manager to carry out the work. अगर employee इतने अच्छे हैं कि ऑलरेडी काम करके दे देते हैं, इतने efficient है, इतने intelligent है, तो उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं वो अपने बॉस को. तो जिस मैनेजर के अंडर भी ऐसे इंटेलिजेंट एम्प्लॉय होते हैं या वर्कर्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज करके काम करके दे देते हैं, तो उनके अंडर भी ज़्यादा लोगों को आप रख सकते हो. अगर एम्प्लॉय अच्छे हैं तो मैनेजर को प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा लोगों को हैंडल करने में. इट विल बी ईजी फॉर द मैनेजर टू हैंडल मैनी पीपल. नाउ नेचर ऑफ जॉब. Okay, now if the routine job has to be performed, then there can be a large span, but the specialized and challenging job, small span is preferred. So what are they telling you here? See, if the job is very critical, like if you talk about the job of this vice president and all, so this job is very critical. So under vice president, or you can say that only under like president, or just keep it like vice president only. वाइस प्रेसिडेंट. ओके, नाउ दिस इज़ अ क्रिटिकल जॉब. वाइस प्रेसिडेंट का जॉब बहुत क्रिटिकल रहता है, तो इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसे रहता है? इसके नीचे एवीपी रख देते हैं अपन. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, मैं उसमें से एक ले रहा हूँ किसी भी बुक का. ओके, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एक ही असिस्टेंट व एवीपी हो सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड. सो व्हाई दिस स्पेन? बिकॉज एक ही क्यों रखा है? दो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट भी रह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. व्हाई? बिकॉज द जॉब इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इट मस्ट रिक्वायर a lot of intelligence level and lot of skills. So that's why only a single person or more, just one more we can keep, like two assistant vice president we can keep, not more than that. So this is the nature of the job. If the nature of the job is very critical, then in that case you will put just two under him. Now, importance of organization structure. So structure organize properly all the operation of the business, ensure better flow of communication. So because of this organization structure, what happens? The flow of information will be very smooth in the company. Then a clear structure make it easy to check the responsibility of each part of business. So here for each and everything they are having some kind of organization structure, so it will be easy to check the responsibility for a particular job, that who is responsible for what kind of activity. Third, a clear idea about the working style of the enterprise can be known by organization structure. So when you look at this organization structure, you can clearly define that what kind of company it is. Like for example, if you look at the structure of the IT company or a manufacturing company like Hindustan Unilever, you can say that you will find in case of Hindustan Unilever, you will find workers working under at the lower level, but in these IT companies you will not find such kind of too many workers will not be there. So you can say that this is a IT type of company, because you will see the position like computer engineers and all. So organization structure can be clearly defined. Now, fourth point, organization structure allows correlation and coordination among human, physical, financial resources. So this organization structure create a relationship between man, money, materials. Okay, so it is just a kind of position which is created where they are going to use man, money, and materials. Okay, so that is the kind of all these resources. Without these resources, they cannot work properly. So physical means what? Machinery. Human means peoples, and financial resources means money, man, money, materials. Okay. Now fifth, it clearly defines the level of the management and span of control under it. So top level, middle level, lower level can be seen in this organization structure, and the span of control can also be seen. You will find assistant manager position or deputy manager position, and under him and under them how many employees are there, is how many employees a particular deputy manager or assistant vice president or managing director they are taking care of. It can be clearly seen in this organization structure. Now the types of organization structure. Okay, so basically there are two types: function structure and division structure.
So what is functional structure? See, when the activities of the jobs are grouped and keeping in mind the function of the job, then it is called a functional structure. For example, all the job related to the production is grouped in the production department, related to sales in the sales department, related to purchase in the purchase department, and so on. Within the department, also grouping is done on the basis of specialized function. So here you can say every territory was grouping wise as included in the in function structure. Like according to region wise, you can also see this function structure. Like in case of bank, you can say, or in case of railway, you must have seen a western zone or central zone. So this is also kind of functional structure where the functioning of railway will be done in specific regions. So here let us have a look at the flow chart. Now this is a function structure. So function structure is basically made when on the company is making just one single type of product. So see here, managing director is there, and production department, marketing, finance, and purchase department are there. And all this activity like related to production, like processing, quality check, repair and maintenance, all these activity are been under production. In finance, capital structure and financial planning, and similarly sales, customer service will be under marketing. So they're just grouping the activity and putting them under these various departments. So this is a kind of functional structure. Okay, now what are its advantages? Why do we make this function structure? Specialization. Specialization means when you're putting all the activities under one department, then that particular department will become specialized in its own work. वो अपना काम ठीक से कर पाएगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम जो रहता है वो सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड रहता है, तो उन लोगों का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, दे विल बी बिकमिंग एफिशिएंट. देन इजी सुपरविजन, निगरानी रखना. What is the meaning of supervision? निगरानी रखना. So here the supervision can be done easily. If you want to do the supervision for this finance department, you can visit the finance department and you can check whatever you want to check. So this is a kind of thing in this organization structure. There will be a specific place for it. You can visit and you can inspect. Okay, so this is called as easy supervision. Then easy coordination. As we already know that all these activities are related to the various department, जितनी भी अलग अलग department देखिए, like production department, finance department, उससे related activity उनके अंडर ही है, right? So यहाँ पर coordination करना बहुत easy होता है. Why? Because all those activities are under one department only. So it is very easy for the people to coordinate by the help of communication. आपको communicate करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा फ़ोन पे वगैरह, और इससे क्या होता है, communication बेहतर होता है. ठीक है, तो इससे coordination अच्छा हो जाता है. और ये तो एक particular department की हमने बात कर ली coordination की. Among these various department like finance department, marketing department, production department, these department also have to coordinate with each other. इनको भी अपने साथ में काम करना है, because the overall objective, the main goal of the company has to be achieved. So you will have to coordinate, like all these department will have to coordinate and work together towards the goal achievement of the company. Now fourth point, it helps in increasing managerial efficiency. So all the managers efficiency will be increased by the help of this organization structure. Because suppose today if a manager is handling 4 people, then definitely in the future he will be able to manage 8 also. So this is kind of a specialization which come with many years of experience. Okay, so it is a type of increasing, it helps in increasing managerial efficiency. Then effective training, it makes the training of the employee more easy, as they are trained in the limited type of skill. The employee production department are given training of the production techniques only. So effective training means what? See, when you want to give training, आपको training देनी किसी भी particular department के लिए, तो इसको easily plan किया जा सकता है, because all these departments are working differently. So you can plan at a time for production department, then after that you can plan for the training of finance department, like that you can train them. So it is very easy to train the employees, because we are already having a organization structure, and we can decide that who will be trained first. Suppose we want to train the production department employee first, so we can give priority to them. After that, maybe possible we'll give priority to the marketing or sales people, and appointing some trainers, good trainers for training such kind of employees. Now what are its disadvantages? So difficulty in achieving organization goal. So this department become specialized in their own way only. They fail to see the prospect of the whole organization. What happens? Why they are writing here this difficulty in achieving organization goals? Okay, see what happens when this
various department are working, so what they think that they are the only one, they are working in their own way, they think that they are the superior ones in the company, and their department is having lot of importance in the company. तो ऐसा अपने आप को अहमियत दे देना, इसको बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इससे बिगड़ सकता है कि हम ही हैं जिसकी वजह से कंपनी चल रही है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा बोलता है, तो दे विल ट्राई टू शो देम सुपीरियर इन कंपैरिजन टू द अदर डिपार्टमेंट। सो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, बट इट समटाइम इट लीड्स टू अनअचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, कंपनी अपने गोल अचीव नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ लेस कोऑर्डिनेशन अमंग देम। देन सेकंड, डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड। जो डिपार्टमेंट है लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके जो हेड है उनका एटीट्यूड जो है, इज सपोज इज हैविंग अ वेरी बैड एटीट्यूड टुवर्ड द अदर organizational heads or other departmental heads. So what will happen, this will create to lead to some rigidity of taking decisions, and sometimes there will be some conflicts among the managers, all these departmental heads। तो conflicts हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, because of this attitude is not good for the company। so it is somehow this organization structure good, अच्छा भी होता है but बुरा भी होता है। then third, difficult to fix accountability। See, when the organization goal is not achieved, then it becomes very difficult to make one department accountable for this because all the department are integrated। So what happens here in this functional structure, suppose production department has achieved its target, finance department also, purchase also, marketing also, एंड बट इन सम केस अगर हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने नहीं अचीव किया या ठीक से काम नहीं किया, तो ये किसको ब्लेम कर सकता है, ये फाइनेंस वालों को ब्लेम कर सकता है क्या, कि इन्होंने मुझे टाइम पे फाइनेंस नहीं दिया, मेरी मशीनरी नहीं आई, मैं प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाया। और फाइनेंस वाला बोलेगा कि हमने तो उनको बात करी थी, इन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया। तो दे आर जस्ट ब्लेमिंग ईच अदर। जब आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हो, तो ये डिसाइड करना कि किसकी एक्चुअल गलती है पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिस पॉइंट रेफर्स टू दैट डिसएडवांटेजेस वन। ओके, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी थी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज। ओके, सो दिस पॉइंट इनफ्लेक्सिबिलिटी, दिस शोज व्हाट, कि यहाँ पर सारे एम्प्लॉय एक ही फंक्शन के ऊपर ट्रेंड रहते हैं। ओके, सो द डिपार्टमेंट टू विच दे बिलोंग दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट्स। सपोज एन एम्प्लॉय इज देयर हु इज वेल स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ट्रेनिंग, एंड इफ यू ट्राइंग टू सेंड हिम टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि वो उस पर ट्रेंड नहीं है। तो इसकी सुटेबिलिटी कहाँ है, इस तरह के फंक्शन स्ट्रक्चर कहाँ पर अप्लाई हो सकता है। सो लार्ज कंपनियाँ जो कि और ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, ये उन कंपनियों के लिए अप्लाई होता है जो कि एक ही प्रोडक्ट बना रही है। सिर्फ और एक कंपनी है जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनाती है सिर्फ एक, तो वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। डिविजनल स्ट्रक्चर तब बनता है जब कंपनी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही हो। ओके, तो उनको डिवीजन बनाना पड़ता है। ओके, now second point, organization which require high degree of functional specialization with diverse activity। अब ये कब होता है, जब कंपनी बड़ी हो जाए और हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब वर्क, लाइक प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, like finance is a function, so they need specialization for this। So and big organization they will have to make this functional structure or organizational structure। Now second is divisional structure। What is divisional? As I already told you, division structure is suited in the big organization producing more than one type of product. These activities related to the one product are grouped under one department। So let us have a look at this structure। So see here is a company who is making textile, cosmetics, medicines and soaps। So four products they are making. So there will be, under them there will be a function structure. You can see function structure is there, production department, purchase department, marketing, finance department, here also, here also, here also। So under every division there is their own functional structure। So this is a big organization like Hindustan Unilever, you can say, and they are also having divisional structure। So they will be having separate division which will be making or taking care of one single line of product. Like if you're talking about cosmetic in Hindustan Unilever, so there are many product like all this variety of Fair and Lovely creams they are making, so it will be manufactured here। So they'll be taking care of just making that cream only and not taking care of any kind of textile product or medicines, like that it will be।
Okay, now take a look at example. If an organization producing soap, textile, medicines, etc., then all the activity related to the medicine will be grouped under one medical department. As I told you, जितनी भी एक्टिविटी रहेंगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो एक ही डिवीजन के अंदर रखी जाएंगी. ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? इससे क्या होता है? प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है. प्रोडक्ट बनाने में सपोज दे आर मेकिंग फेयर एंड लवली और कॉस्मेटिक एंड सोप, सो दे विल बिकम परफेक्ट और स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Okay, then second is fast decision making. Fast decision making is there because why? Because they are not they will not be interfering in the other product of the company. When you are not interfering other product of the company, then definitely you can take care of your particular product. तो जो फेयर एंड लवली बना रहा है उसको कॉस्मेटिक जो बना रहा है उसको मेडिसिन पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने डिसीजन बड़े आराम से ले सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर. देन अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, आप किसके प्रति जवाबदार हो. ओके, सो इट इज़ इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन इजीली बी असेस्ड एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल. अब यहाँ पर देखिए, जस्ट लुक एट इट. If some problem is there, suppose these three departments are performing but this cosmetic department is not performing, so if the sales are down for this cosmetic department, then we can easily fix them कि किसकी वजह से ये चीज़ कंपनी का प्रॉफिट कम क्यों हुआ. तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की वजह से कम हुआ, ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो ये चीज़ अकाउंटेबिलिटी आराम से पता चल सकती है. Okay, in case of functional it was difficult, but here we can find out कि किसकी वजह से ऐसा हुआ. Then flexibility, fast decision making leads to flexibility. Fast decision से होता क्या है? टाइम बचता है तो आप चेंजेस कर सकते हो अपनी कंपनी में. Flexibility means you can make changes. Now, expansion and growth. New departments can be added without disturbing the existing departments. Now, जब भी कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, जैसे कि कंपनी इसके बाद ऑल टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन्स, इसके बाद एक और भी करना चाहती है, लाइक हियर दे वांट टू मेक चॉकलेट कन्फेक्शनरी ऑल्सो. वन मोर डिपार्टमेंट वी कैन मेक हियर लाइक दिस एंड विल राइट चॉकलेट, चॉकलेट, chocolate. Okay, so it will be like one more department over here. So one more division we have made, and now there'll be same activities like this here, like production, purchase, marketing, finance. So they'll be taking care of this chocolate making, and there will be, and all these other department will not be disturbed. If you're making here another department chocolate, then these will be not disturbed, इनको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. तो ये चीज़ यहाँ पे बोली एक्सपेंशन ग्रोथ कर सकते हो. डिविजन्स डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड because there are so many divisions, so you will be requiring more people, more raw materials, like that. Okay, so more resources will be required. Then product focus on development. So product focus on development means each and every department is making one single product, so you can just focus on that particular product only, and they fail to keep this themselves as a part of one common organization. सो व्हाट हैपन सी, अगर अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो भी प्रोडक्ट हाईएस्ट सेलिंग का रहता है, तो वो दिखता है कि मतलब वो सारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है, और पूरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान नहीं देते. सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है, आई एम द ओनली वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो पर प्रोडक्ट फोकस हो जाते हैं सब लोग, उनको दूसरे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं. लाइक कॉस्मेटिक को कोई मतलब नहीं आपके टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से, और टेक्सटाइल को कोई मतलब नहीं कॉस्मेटिक या मेडिसिन से, लाइक दैट. Then conflict and allocation of resources. So when these resources are allocated among these various departments, like money is a resource, okay, पैसा भी एक resource है. So if this resource is distributed and somebody is not getting enough money for this carrying out this activity, then there can be a conflict among this all these divisions. तो वहाँ पे थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो सकती है, लड़ाई नहीं मीन्स मतभेद हो सकता है, एक डिसकंटेंट दिख जाता है लोगों के बीच में. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये अराइज हो सकते हैं यहाँ पर. नाउ सुटेबिलिटी. सुटेबिलिटी केस स्टडी में क्या दिखेगा आपको? इन केस स्टडी विल फाइंड दैट द कंपनी विल बी मेकिंग सो मैनी प्रोडक्ट्स, सो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एंड दे विल आस्क यू कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए. सो इफ देर ऑलरेडी सो मैनी प्रोडक्ट कंपनी इज मेकिंग, देन डेफिनेटली यू शुड राइट इन आंसर डिविजनल स्ट्रक्चर शुड बी मेड. ओके, नॉट फंक्शन स्ट्रक्चर. फंक्शन स्ट्रक्चर कब लिखना है आपको? जब केस स्टडी में ऐसी बात करें कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही है कंपनी. ओके, सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए. ओके, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की हम बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जिसको प्रोडक्ट अच्छे से बनाना है तो डिवीजन स्ट्रक्चर बना सकता है.
Third, organization which require each division to self-contained, and under division structure each department has production self, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अपन ने यहाँ देखा था हर डिपार्टमेंट का खुद का एक फंक्शनल स्ट्रक्चर था उसके अंडर में। तो ये सुटेबिलिटी जिसको ऐसा चाहिए स्ट्रक्चर वो बना सकता है। देन ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर। अगर कंपनी इस तरह से है कि फ्यूचर में और अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाहती है, व्हाट इज लाइन ऑफ प्रोडक्ट कमिंग आउट विथ न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स like cosmetic, like textile, then after that we plan to make medicine, after that we plan to make chocolates, then decided to make cold drinks, so we are adding this प्रोडक्ट लाइन। हम प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा रहे हैं, लाइक आयुर्वेदिक सोप भी निकाल दिया कंपनी ने, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोइंग कंपनीज। सो इफ दे आर प्लानिंग फॉर मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट देन दे शुड मेक डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? So all these things we already discussed, like what is this organization structure, the same thing is written over here. Then span of management. So let us move on. We already look at this division structure, function structure. Then this difference is there. You don't have to do this particular difference. In the next topic, we'll be looking at delegation of authority. Okay, so that's all for today.